So we are going to start our topic biotechnology today. In the last two classes, we had some basic concept related to biotechnology. And in the previous class, we had a discussion about cell, that how cell function and mainly about DNA, RNA and protein, right? So today we are going to talk about biotechnology. The main topic that we are going to discuss in biotechnology is genomics, right? So that is our first topic of biotechnology, genomics. And in the last class, we had some background about it. And the background was very simple. That is DNA, and we can call it gene also, right? DNA gave rise to what? RNA. And RNA gave rise to protein. And protein is responsible for all the structure and all the function of the body, right? The structure and function of the body. Protein is enzyme, like I told you that all enzymes are protein. So we can say like protein is responsible for life process. The protein is responsible for life process, that is metabolism, right? So we are adding one more thing, metabolism into this. So DNA to RNA, RNA to protein, protein metabolism. Metabolism is a life process. So collective life process is known as metabolism. Whatever we do, whatever is happening in our body is metabolism, and whatever happening in the body is due to enzyme. Enzymes are what? Proteins. So this is one thing that we should know. In the last class also, we had it like DNA to RNA, RNA to protein, transcription, translation, and then what protein can do, it can determine the metabolism, right? Now, today we are going to discuss something around that only. So I came early, I think. Achha. So, DNA, gene, you know that. Gene is basically what? A segment of DNA. And we have 30,000 genes. We talked about it. So, आप दो बातें कर सकते हो. एक तो आप हर बार बोलो कि I have 30,000 genes, you have 30,000 genes. Or we can have a term for it. And the term is genome. So, genome is all the gene of an organism is known as genome. Let's say you know about human beings. Human beings, they are having 30,000 genes, that is there. But what about elephant? We don't know about it. How many genes are there in elephant? Neither we supposed to know about it. So we can simply say a word that is called genome, elephant genome. So whenever you say elephant genome, it means collectively you are addressing all the genes present in elephant. If I say rice genome, then you are addressing all the genes present in rice. You don't need to remember and memorize the number of genes a particular organism have. Simply, if we talk about total of it, genes to hai, but total, all of them, that is called what? Genome. So genome is a word that will address total gene present in any organism. Human genome, 30,000 gene, rice genome, elephant genome, ant genome, chimpanzee genome, whatever you want to say, you can simply say. Genome is a word. And if you study the genome, if let's say if we are studying the entire genome, then it is called what? Genomics. So now you understand what is genomics? The study of human genome. What is genome? Genome is collective. I mean all the genes of human being together known as genome. So all the genes, genome, and a study of all the genes together, that is known genomics. So we'll talk about it.
But genomics is important topic. But you know that there is a word for RNA also. Let's say if we have to talk about total RNA present in any cell or any body, total RNA, whatever RNA DNA has made, the total RNA would be known as transcriptome. What we'll call it? Transcriptome. Now you know why it is called transcriptome. Because the process by which RNA is made is known as transcription. So transcription is a process of RNA formation by DNA. And total RNA present in a cell or total RNA present in a body organism is known as transcriptome, right? And if we study the transcriptome, if we study all the RNA together, सारे के सारे पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? Transcriptomics. What we call it? Transcriptomics. UPSC asked one question on transcriptome prelims में, और उसमें लिखा था कि transcriptome word can be used for which of the following? And there was an answer: messenger RNA, whole messenger RNA of the body. तो ट्रांसक्रिप्टोम RNA, अब चाहे मैसेंजर हो चाहे कुछ भी हो, you have to relate it, right? So that question has been asked in prelims, that transcriptome is total RNA present in the organism. Similarly, if we are addressing total protein address कर रहे हैं, right? If we are going to address the total protein which are present in any organism or in any cell, for that we are going to use a term called proteome. What we call it? Proteome. And then study of proteome is called proteomics. We can call it proteomics. Clear? Total one. And then at the end, there is another thing, total metabolite. When there is a metabolic activity, metabolic activity means what? It's a biochemical reaction. In any biochemical reaction, what will happen? Some byproduct will come up, some chemical will be formed in the body. Let's say if there is a biochemical reaction where glucose is being broken down into carbon dioxide and water. So carbon dioxide and water is what? It's a byproduct. So whenever metabolic activity is going on in the body, some byproduct will form. And all this byproduct and all this product which has formed in the body is known as metabolism, right? और उसको क्या कहेंगे हम? Metabolome. Metabolome. And a study of it is known as metabolomics. So first of all, you need to understand it. That DNA to RNA, RNA to protein. Protein is there to determine the metabolic activity, right? And DNA means gene, and total gene collectively known as genome. The study of genome is known as genomics. Total RNA made by any cell or organism is known as transcriptome, and a study of transcriptome is known as transcriptomics. That means the study of transcriptomics is what? The study of RNA. Total type of protein that a cell can make, an organism can make, are collectively known as proteome. And then study of different types of protein in our body is known as proteomics. Total type of chemicals that are basically produced in the body by metabolic activity are known as metabolome, right? And the study of all the chemicals present in the body, that will be known as metabolomics, है ना? तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना है. यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस ट्रांसक्रिप्टोम, सो नेक्स्ट टाइम कुछ भी पूछे इसी से रिलेटेड, यू विल बी एबल टू आंसर इट. बट बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड ट्रांसक्रिप्टोम and it was just a name that you have to connect with the topic. Transcriptome with the messenger RNA. That's it. Nothing was more. But now next level could be that you need to know the significance and function of all the science. Why do we study genomics? Why do we study transcriptomics? Why do we study proteomics? Why do we study metabolomics? Genomics is something that we are going to study in detail in this class only, right? So in detail we are going to talk about it.
Transcriptomics is something that we are going to have an idea about it here only, right? Proteomics and metabolomics is the same way we are going to have an idea, right? So let's say if I want to study my genetics or your genetics, genetics means the kind of gene you have, the kind of information you got from your father and mother, then what I need to study? Genomics. यही करना है ना? What I am saying, in the last class we talked about how this information are written onto the DNA. And I just want to read all those information written on your DNA. The DNA that you got from your parent, I want to read that. I want to get all the information out of it. So which science I will opt for? Genomics, right? So genomics give an idea that what kind of genes I got it from our parent. What kind of genetics you are having. That is what it is, genomics. But you know that all the genes in the body are not functional. Like I told you that out of 30,000 genes that we have in a particular cell, only 2% genes are active. How many genes are active? Only 2%. So I got 30,000 genes, but none of my cell is having all 30,000 genes active. Skin is having 2% gene active, that is another 2%. Muscle is having 2% gene active, that is another 2%. Out of this 30,000, 2% genes are active, but this 2% combination are different at different places. That is how different type of cells and tissues are formed. You got it? Now I want to study one more thing. I want to study what kind of genes are functional in my muscle. Only functional one, not the one which is non-functional. Like I told you, out of 30,000, only 2% are active. Active means functional. So 98% genes are non-functional, 2% genes are functional. What do you understand by gene functionality? Gene functional होने का मतलब क्या है? कि वो जीन जो प्रोटीन बनाएगा. जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना. Your work is to study. Right? अभी आपका काम क्या है? स्टडी करना. So you are studying on a daily basis. It means you are functional. But let's say you stop studying, then you are non-functional. So what is the ultimate purpose of a gene? To make protein. And only 2% genes are active in a particular cell. And I want to study only 2%. अगर मसल सेल निकाला है तो मुझे 30,000 क्यों पढ़ने हैं? मुझे सिर्फ एक्टिव जीन्स ही पढ़ने हैं. And active genes पढ़ने हैं तो will focus on an active 2% on one only. So it means that if I study the RNA, RNA is what? The message given by DNA is known as RNA. And why this DNA or gene has given this message? To make the protein. मतलब जिसका RNA मिला वो फंक्शनल है, जिसका RNA नहीं मिला वो फंक्शनल नहीं है. It's the same way that you are preparing for UPSC. अभी आप लोग इतने लोग बैठे हुए हो, लेकिन आप में से 20% लोग ने, एस्पिरेंट ने कॉपी जमा किया. एक टेस्ट हुआ, उसका कॉपी 20% लोगों ने जमा किया. मतलब 20% फंक्शनल है कि नहीं? 80% नॉन फंक्शनल है. यू गेट मी पॉइंट? होता है ना ऐसा. मतलब पर्सनली नहीं बोल रहा हूं मैं किसी को, बट यू अंडरस्टैंड इन दैट वे. आई मीन वी टीचर लाइक टेक इट इन दैट वे. जब हम किसी क्लास को पढ़ाते हैं एंड देन वी रियलाइज दैट ओके 500 स्टूडेंट आर सिटिंग आउट देयर एंड वी कंडक्ट द टेस्ट. अब जिस दिन टेस्ट होता है उसने 250 ही आते हैं, 250 गायब है. तो हम मान लेते हैं कि 250 नॉन फंक्शनल है. वो आ रहा है, जा रहा है, एसी चल रहा है, बढ़िया से बैठ रहा है 3 घंटे, लेकिन वो नॉन फंक्शनल है. जीन्स तो है, एस्पिरेंट तो है, बट एक्सप्रेशन नहीं है. यू गेट माय पॉइंट? सो 30,000 जीन्स आर देयर बट ओनली 2% आर फंक्शनल. सो जो फंक्शनल होगा वही तो लिखेगा. क्या लिखेगा? आरएनए पे लिखेगा, इंफॉर्मेशन देगा. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑफ जीन, सो व्हाट यू नीड टू स्टडी? जीनोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है कि नहीं? अगर मुझे यह जानना हो कि हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, तो आई विल नॉट जस्ट टॉक टू यू. आई विल जस्ट से दैट ओके दिस इज द क्वेश्चन, write an answer and submit to me. So after looking at your answer, I can judge that whether you are on a right path or not, whether your preparation is going right or not. Similarly, if certain genes are functional or not, that can be deciphered just by looking at the messenger RNA the genes are making or not.
So transcriptomics give a better idea about gene functionality, which genes are functional, which are not. You got it? Moreover, proteomics, I'll explain it, don't worry, एक बार और मैं बताऊंगा. Proteomics means that we can differentiate between, proteomics are used to differentiate between very similar two species, है ना. कई बार दो species बड़े similar होते हैं, although it doesn't apply with the human beings because human being is just one species, right? But there are many amphibian species which are quite similar to each other. If you look at those species, then we won't be able to differentiate. हमें लगेगा ये भी एम्फीबिया यानी मेंढक है और ये भी मेंढक है. दोनों का शेप साइज एक ही जैसा है, कलर्स भी लगभग एक ही जैसे हैं. They are living together in the same habitat. So we might consider that these are the same species. But don't you come across the news like in Western Ghat, new amphibian species has been discovered. In northeastern state, new reptile species have been discovered. तो आया कहां से? ये क्या अभी बना है? नहीं, ये था इधर ही, हम नहीं समझ पा रहे थे. टेक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो जूलॉजिस्ट होते हैं, वो अभी तक मान रहे थे कि ये ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स है, देन दिस आर द वन स्पीसीज. But then they studied it. The moment they got the protein analysis of these two frogs, then they could realize there is a stark difference between both. And that has differentiated them into two species, right? So proteomics is one such area where we can analyze the protein profile of individual organism, and then we can get to know whether this organism belongs to one species or two different species. You get my point? That is one thing. Moreover, abhi bhi aur bhi hai. And metabolomics. Let's say metabolomics is all about that what is happening inside the body. है ना? कभी आपने देखा कि जब भी हम टेस्ट कराने जाते हैं ना, मेडिसिन, I mean, doctors write for blood test and urine test and everything is there. तो उस टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे we get to know that what we are suffering from. सिंपल सी बात है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. यूरिन टेस्ट इज समथिंग दैट वी डू. तो यूरिन में क्या टेस्ट करते हैं? वो कुछ तो टेस्ट करते होंगे. जस्ट लुक इनटू द केमिकल प्रोफाइल ऑफ द यूरिन. व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द यूरिन. यूरिन टेस्ट का सिंपल मामला ये समझ लो आप. जैसे मान लो कि आपके फ्रेंड का कोई घर है एंड यू आर सो मच इंटरेस्टेड इनटू फ्रेंड्स लाइफ, मतलब उस हद तक इंटरेस्टेड हो कि आप डर के शाहरुख खान हो, है ना. यू आर जस्ट ट्राई टू लुक इनटू कि इसके घर में चल क्या रहा है, मतलब इतना तक भी आपको जानना है कि उसके किचन में खाना क्या बन रहा है. तो उसका सिंपल तरीका है, मैं बताता हूं, अप्लाई मत करना कहीं पे. सुबह सुबह जाके उसका कूड़ा उठा लो. कूड़ा समझते हो? सुबह सुबह उसका कूड़ा ले लो और कूड़े को आराम से बिछाओ ऐसे एंड लुक इनटू द थिंग्स. While looking into the कूड़ा you will get to know कि रात में खाना बना क्या था, पता चल जाएगा. अगर मान लो उसमें से लौकी का छिलका निकला, मतलब उसकी लाइफ खराब चल रही है कि नहीं? लाइफ खराब और लौकी से सिनोनिम है ना. कि जैसे मैं किसी लौकी बना है, कोई पूछा क्या हाल है, मतलब बताने की जरूरत नहीं, बुरा है, बताओ लौकी बनी है, बात खत्म. इट इज इक्वल टू बुरा है ना. अगर वो नॉनवेज खाया तो फिर चिकन विकन की हड्डियां होंगी. अगर एग खाया तो उसका एग का शेल होगा, कुछ तो होगा. यूरिन इज लाइक दैट ओनली. डॉक्टर्स लुक इनटू द यूरिन प्रोफाइल टू नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. यूरिन इज लाइक कचरा ऑफ द हाउस, राइट. तो उसका एक प्रोफाइल पता है हमें, यूरिन में इतना परसेंट ये होता है, इतना ये होता है, इतना ये होता है, इतना ये होता है. सडनली उसके अंदर कुछ और आने लगा, इसका मतलब क्या? देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन. यू गेट मी पॉइंट? दैट इज बेसिकली मेटाबोलोमिक्स. Because metabolism is a life process happening in the body. There is some distortion in the life process. There is some problem in the life process. So definitely it will release some other chemical. Either some extra chemical will be released or some chemical will go short and that will reflect into blood reports and urine report and other reports. So metabolomics are used to differentiate between diseased and healthy person. एक सेल है जो diseased है, एक सेल है जो healthy है. So how can we differentiate? We can differentiate by the chemical analysis, because disease cell will have certain extra set of chemical or there is a lack of some chemical.
Let's say I'll give you one example. If I test blood of anybody and I realize that sugar level is too high, glucose level is too high, तो क्या है वो डायबिटिक है? क्लियर? तो ये जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो कहां से आया? मेटाबॉलिक एक्टिविटी से तो आया ना। हमने स्टार्च खाया, रोटी, राइस, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन के बाद क्या बना? शुगर. एंड हाई शुगर लेवल इंडिकेट्स दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू डायबिटीज. यू गेट माय पॉइंट? और लेट्स से you might have come across GM crop. जानते हैं ना GM crop? Genetically modified crop. And genetic modified crop will have some extra protein, some extra chemical. That is why it is genetically modified. अभी recently 2021 में फ्रांस ने एक क्लेम किया, इंडिया पे एक क्लेम आया, बिकॉज इंडिया एक्सपोर्ट्स राइस टू फ्रांस, है ना. फ्रांस हमसे राइस इंपोर्ट करता है, हम बहुत अच्छी क्वालिटी राइस ग्रो करते हैं. फ्रांस इज वन ऑफ द इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया. बट इंटायर यूरोप इंक्लूडिंग फ्रांस, दे आर क्लोज फॉर जीएम क्रॉप. वो कहते हैं कि जीएम क्रॉप हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू ईट जीएम क्रॉप. सो वेयर एवर दे आर हैविंग एनी बिजनेस टाई अप और एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाई अप विद एनी कंट्री, दे पुट अ कंडीशन दैट नो मैटर व्हाट यू वोंट बी सेंडिंग जीएम क्रॉप. अच्छा, इंडिया में जीएम क्रॉप, हम जीएम राइस उगाते भी नहीं है, वी डोंट ग्रो जीएम राइस. जीएम राइस इज नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया एट. भाई देवी, आपको पहले ही बता दूं कि बस इंडिया में एक ही राइस हम ग्रो, सॉरी एक ही जीएम क्रॉप ग्रो करते हैं, वो है बीटी कॉटन. बीटी कॉटन के अलावा कुछ भी नहीं ग्रो करते, राइट. सो जीएम राइस तो क्वेश्चन ही नहीं है, राइट. बट 2021 पाकिस्तान, फ्रांस claimed with all the reports and everything that India has imported, France has imported, India has exported GM rice to France. हमने GM राइस उसको एक्सपोर्ट कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, राइट. अब ये कैसे हुआ उसको हम बाद में देखेंगे, एंड दैट्स ट्रू, वी हैव डन इट, राइट. सो हाउ दे डिफरेंशिएटेड इट बिटवीन GM राइस और नॉर्मल राइस? मेटाबोलोमिक. Because if certain genes has been put into the rice, so this rice gene will make messenger RNA, this RNA will make protein, and this protein will have some extra chemical into that rice. So normal rice, their chemical profile will be fixed one. GM rice, there will be certain change in the chemical profile. So by looking into the chemical profile, we can find out whether the GM contamination is there or not. So all this science has different functionality. हम लोग एक एक लाइन लिख सकते हैं. सो यहां पे लिखो, इसको तो पढ़ने वाले हैं लेकिन आप लिख सकते हो. जेनोमिक्स, all tissues are having same genes, but 2% genes which are active that are different in different tissues. You get my point? So 30,000 genes are there, but there is a set of 2% genes which are different in different cell. 2% that is different, that is different. We'll talk about that. Likho. So first thing, you can write genomics. It helps in a study of genetics or gene profile. Genetics or gene profile of an organism. Right? Just one line, because we are going to discuss more about it. Transcriptomics, you can write. It helps in a study of active genes in a cell or organism, by analyzing RNA. So RNA पढ़ेंगे, transcriptomics. It will tell you that
which genes are active, which are not. Got it? Next you can write proteomics. We'll talk about, अभी genomics में आएगा वो. फिर लिखो proteomics. You can write. It helps in differentiating. It helps in differentiating two closely related species. Two closely related species which look similar but different protein profiles can establish them as two different species. As two different species. Right? Next one is metabolomics. It helps to differentiate between GM and non-GM crop, comma, healthy and diseased cell, on the basis of low molecular weight, biochemicals produced during metabolic activities. Right? Again I'll tell you, मेटाबोलोम का मतलब क्या? ऑल द लो मोलिकुलर वेट. लो मोलिकुलर वेट मतलब स्मॉल. प्रोटीन हैवी मॉलिक्यूल है ना, प्रोटीन इज हैवी, बट लो मोलिकुलर वेट मींस व्हाट? वेरी स्मॉल, टाइनी, लाइट मॉलिक्यूल. सो रिएक्शन होने के बाद जब टूटेगा, प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे तो लाइटर मॉलिक्यूल बनेंगे. ऑल द लो मोलिकुलर वेट बायोमोलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी लाइक यूरिया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब क्या है? मेटाबोलाइट्स हैं, मेटाबोलोम है. Right? And we study the metabolome, that is called metabolomics, and that will differentiate between healthy and diseased cell, GM and non-GM crop. Again I am telling you, if there is a GM crop, जैसे मैं एक GM crop का नाम देता हूं, एडवांस में थोड़ा हम चल रहे हैं, आगे चल के हम क्लैरिटी से पढ़ेंगे. There is a GM crop that is called golden rice, you might have heard. There is a normal rice, there is a golden rice. So normal rice will have a starch, golden rice will have a starch plus vitamin A. अब विटामिन ए क्या? लो मोलिकुलर वेट है. सो इफ वी हैव एक्सेस टू गोल्डन राइस एंड नॉर्मल राइस, और उससे कुछ बना के अगर हमें कुछ दे दिया कि ये लो, ये भी राइस का है, ये भी राइस का है, वी वांट दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम जीएम क्रॉप, तो अब दोनों का एनालिसिस करेंगे. तो क्या ढूंढेंगे? अगर सिर्फ स्टार्च मिला तो इट्स अ नॉर्मल राइस, स्टार्च के साथ विटामिन ए भी मिल गया तो इट्स व्हाट? जीएम राइस. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन normal and GM. Similarly, there is one cell or tissue which are healthy, there is another tissue which are diseased. So healthy one will have normal healthy profile, diseased one will have something extra. क्यों? क्योंकि कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया, तो वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आया तो उसने भी तो केमिकल बनाया ना. अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हो तो आप में वो केमिकल नहीं होगा. I'll give you one example. If somebody is suffering from HIV, HIV पॉजिटिव है, तो क्या HIV पॉजिटिव में हम वायरस ढूंढते हैं? नहीं. वी लुक फॉर अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड HIV1 प्रोटीएज इन द ब्लड. इफ द डॉक्टर कुड फाइंड HIV1 प्रोटीएज, दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV, बिकॉज दैट पर्टिकुलर HIV1 प्रोटीएज प्रोटीन कैन ओनली बी मेड बाय द HIV वायरस. वो और कौन बना सकता है? HIV वायरस ही बना सकता है, और दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता. हमारा सेल बनाएगा ही नहीं.
Let's say you might have heard about some disease called Alzheimer. Alzheimer तो infection disease नहीं है ना, ये तो nervous degradation है. So when the nervous system is degrading and it is turning into Alzheimer, so we don't look for the degradation, we look for the special protein that could be present only when the nervous degradation Alzheimer is going on. That protein name is beta amyloid. तो अगर किसी का ब्लड लिया उसमें बीटा अमाइलॉइड निकल गया तो क्या ढूंढा आपने? प्रोटीन ढूंढा. And that protein, that metabolite is basically telling us about a particular disease. So it can be used to differentiate between healthy and diseased, right? So that is what. Similarly, protein are mainly used for species differentiation because protein अलग है इसका मतलब genes अलग है और genes अलग है इसका मतलब species अलग है. You got my point? Because protein का direct link किससे है? जीन से. जीन है ही क्यों? प्रोटीन बनाने के लिए. If you want to study the gene activity, you have to study the RNA transcriptomics. And if you want to know entire genetics, genetics entirely इसलिए कि मुझे ये जानना है कि what kind of genetics I am going to give to my offspring. तो यहां पे मैं फंक्शनल नॉन फंक्शनल जीन नहीं पढ़ूंगा, मैं पूरे ही जीन पढ़ूंगा. Because my son and daughter is going to get half of my gene and half will come from the other side. So in that condition, I have to study all the genetics, all the genes. So all the genes, genomics, active genes, so that active genes will be studied through RNA and that is transcriptomics. Protein structure to differentiate between two species, proteomics, and then low molecular weight chemicals that is being produced in the body that will differentiate between healthy and diseased cell, or it may differentiate between GM and non-GM crop, right? So that is what we are having. But now we'll focus more on to what? Genomics. Yes, please. वो fortified rice दूसरा है. Rice fortification is something else. It's chemical fortification. So in the rice, if you add something chemically, supplement rice after harvesting with chemicals, so that is called food fortification. But if you change the genetics of the rice और हार्वेस्ट के पहले ही उसके अंदर विटामिन ए आ चुका है तो वो क्या है? जीएम है. पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी. नेक्स्ट टॉपिक इज जीनोमिक्स एंड यू नो दैट व्हाट इज जीनोमिक्स. अब तो बताने की जरूरत नहीं ना जीनोमिक्स क्या है. जीनोमिक्स इज ऑल क्लियर. जीनोमिक्स पता है हमें क्या है. And when we started studying genomics for the first time, it was human genomics. Obviously, when human civilization got the knowledge and science and technology to study genome, then first genome that we studied was of human being only, and that project is known as Human Genome Project. What we call it? Human Genome Project. We call it HGP. It was initiated by USA and there was many other country who helped in that, but USA was the main, you can say, like country, and then it was from 1990 to 2003. It took 13 years to study the human genome. Then the entire human genome was studied for the first time, and that study completed in 2003. You got my point? So not too far, around 21 years back, first time we studied the entire human genome, entire genes and everything of the human being. So this is the basic data about it. The project name is Human Genome Project, HGP, initiated by USA. USA did it. Obviously, USA needed help of the many other countries, but then the owner of this entire project was USA. It took 13 years to complete it. तो हमने किया क्या? आपने देखा ना, डीएनए के स्ट्रक्चर कल पढ़ी थी हमने. So we got the DNA out of the cell and we studied all the information written on that. मैंने बताया था ना कि the information written is base pair, adenine, thymine and guanine, cytosine, and this base pair is 300 crores. So we studied 300 crores of base pair for the first time. That is called Human Genome Project. That is genomics. सारे information पढ़ लिए.
And after reading all this information, America put this information into supercomputer, क्योंकि इतना डेटा है कि उसको नॉर्मल कंप्यूटर भी हैंडल नहीं कर सकता. 300 crores. And it was not of one human being, it was of 1,000 human beings. So 300 crores is coming from one human being. 1,000 human samples has been taken. All of the DNA have been studied. So it was 300 crores multiplied by 1,000. It was such a mega project because it took a lot of time, lot of money. Billions of dollars खर्च हुए इस पे. And America did it for the first time. So the whole idea was just read all the genetic sequence that we have. उसको क्या कह सकते हैं आप? जेनेटिक सीक्वेंस, है ना? जैसे आपने नाम सुना होगा जीन सीक्वेंसिंग. That is the same thing. Sequencing is nothing but this is DNA, like I told you in the last class. This is DNA. Adenine double bond thymine, guanine triple bond cytosine, guanine triple bond cytosine, cytosine triple bond guanine, thymine double bond adenine. So this is a sequence. And in this project, this sequence of 1,000 human beings was studied for the first time. So now up to you. You want to call it like human genome project, ठीक है जी. Genome sequencing वो भी ठीक है. Gene sequencing वो भी ठीक है. Sequencing word means this only, right? That DNA and its sequence will be studied. What is that? इसको क्या कहेंगे आप? This is called base pair. What we call it? Base pair. Nitrogenous base pair or simply base pair भी कह सकते हो. And a study of this base pair, determination of this base pair is called sequencing. So you can write under this project, entire human genome was studied for the first time. And DNA sequence, base pair sequence, comma, base pair sequence, DNA sequence, base pair sequence, or genetic sequence of human genome was determined. You got it? Next you can write. It is also known as gene sequencing or gene mapping. Gene sequencing or gene mapping. Gene sequencing or gene mapping. ठीक है? So Human Genome Project, the idea was to read all the information written onto the DNA. In the last class, we had a discussion that how this information are written onto the DNA. In this class, we are talking about how we read that. Read करने का प्रोसीजर नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि फिर तो साइंटिस्ट बन जाएंगे. What happened and what is the outcome, what we got out of it, that we have to study. But फिर भी थोड़ा साइंस तो पढ़ना पड़ेगा. So we have to look into that, which technology has been used to do this and how this took 13 years time. जब 13 साल समय लगा तो कुछ तो बड़ी बात होगी, right? So there was some technology which has been used. So you can write. Next, you can write technology used in HGP. Technology used in HGP. Technology used in HGP. The first is called sequence annotation. Sequence annotation. The first technology was what? Sequence annotation. And simply you can write for base pair sequencing
और बेस पेयर रीडिंग, फॉर बेस पेयर सिक्वेंसिंग और बेस पेयर रीडिंग। क्लियर है? तो ये जो पढ़ा हमने ना, ये किस टेक्नोलॉजी से पढ़ा? सीक्वेंस एनोटेशन. This technology has been developed by a very famous scientist in biotechnology that whose name is Frederick Sanger. नाम नहीं याद रखना है. और वो बहुत कम साइंटिस्ट में से ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में 2 बार नोबेल प्राइज जीता है ना. एक बार नहीं मिलता लोगों को, 2 बार है ना. तो डोंट गेट इनटू द टेक्नोलॉजी, rather you understand sequence annotation. It means linked to genomics. तो कल के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि sequence annotation is related to which of the following things. So all you need to do that you have to link it with any of the terms that we are using. DNA sequencing, gene sequencing, genome studies, कहीं से कोई लिंक कर दो उसको, है ना. Second technology is bioinformatics. Bioinformatics for data storage and analysis in supercomputer. Data storage and analysis in supercomputer. This is known as gold biotech. This is so valuable. इसको अलग से एक नाम दिया गया बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, and it is known as what? Gold biotechnology, just because it has lots and lots of importance nowadays. Gold biotechnology or bioinformatics is an area where 3 things are merging together: genetics, that means DNA; computer science, that means IT; and mathematics, algorithm. And with the help of these 3, what we have created is known as bioinformatics. You get it? I mean, at the present world, whatever we are doing in health, we are doing it at the DNA level. हम DNA level पे ही ज्यादा काम कर रहे हैं. हमने कोरोना की वैक्सीन बना दी, 1.5 साल के अंदर बना दिया हमने, है ना. Because we first read about the virus, हमने वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग किया, उसका RNA DNA पढ़ डाले, and according to that we understood each and everything about the virus, and on the basis of that we have developed vaccine. That is why many people still doubt and they always give argument कि नहीं वैक्सीन इतना जल्दी कैसे बन सकता है. वैक्सीन तो बनने में डिकेड्स लगते हैं, but not anymore, because now we know how to study the genome, how to study the blueprint, and once you understand the blueprint, making a vaccine will be easy, making a drug for that will be easy. So this kind of power bioinformatics has given us. That is why it is called gold biotechnology. एक तो बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि इसमें लोग कम मिलते हैं काम करने वाले. मतलब कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको जेनेटिक्स भी आए, कंप्यूटर साइंस भी आए और फिर उसको मैथमेटिक्स भी आए. मैंने कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स तो आ सकता है, फिर बायोलॉजी नहीं आएगा. दैट इज वाई बायोलॉजिस्ट आर नॉट देयर इन दिस. ये जितने लोग इसमें काम करते हैं वो IITians है, जिनको पहले से कंप्यूटर साइंस एंड एल्गोरिथम बहुत अच्छा आता है, जेनेटिक्स काम के लायक वो पढ़ लेते हैं. The whole idea is have a supercomputer, store a lot of genetic data, analyze the data, come out with something which could be useful for us. हम लोग पढ़ेंगे कि how this have been used. So 2 things that has been used over there: to read sequence annotation and to store and analyze bioinformatics. Right? Now we are coming to the another thing, that is result of HGP. What we got from HGP? Result of Human Genome Project. Result of HGP. So there were many things that came for the first time in human knowledge and we were surprised by it. The first one of, हम लोग बात कर चुके हैं हालांकि, you can write, human genome is composed of, first point, human genome is composed of 300 crores of nitrogen base pairs.
300 crores of nitrogen base pairs, right? That was also revealed by HGP. Second, there are about 30,000 genes in human genome. 30,000 genes in human genome, right? So how many genes are there? Approximately 30,000, right? But this 30,000 also came as a surprise for many scientists, because after looking into the volume of DNA, scientists had a approximation, they had a kind of, vision that the number of gene in our one cell would be somewhere between 80,000 to 1,10,000. Approximation हमारा यही था. That was the anticipation that it would be around 80,000 to 1,10,000. But what they got in real was way less than what we have expected, 30,000 only. The reason behind it, that more than 50%, up to 75% of our DNA are junk DNA. We discussed it. Junk DNA means there is nothing written. It's just like a repeated sequence, 80, 80, 80, 80 चल रहा है. जैसे मैंने कहा कि you got a book and book has got 1,000 pages, and once you started flipping through the book, then you realize 750 pages are having nothing but ABCD, 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 and only 2,500 pages are having, 250 pages are having sentences. Same thing happened with the DNA. The volume of DNA suggested that it might have around 1 lakh gene, but actually the gene number is what? Approximately 30,000. Why? Because up to 75% of the DNA is junk. है ना? So you can write up to 75% DNA in human genome, up to 75% of DNA in human genome are repeated sequence. They don't code for protein. They don't code for protein, and they are known as junk DNA. What we call it? Junk DNA. So that is one of the great revelation which came out. We'll talk about that in a coming time. So जितना हमारे पास DNA है उसका 75% तक क्या है? जंक है. Only 25% DNA are engaged in protein synthesis. That means 30,000 genes that we are talking about comes in 25% of DNA. अब एक और मामला है कि that 30,000 genes it present in one cell. So is it present in every cell? Yes, it is present in every cell. But are these 30,000 genes are active everywhere? No, it is not. Only 2% of 30,000 genes are active in any given tissue, any given cell. अभी मैं यहां का सेल निकालूंगा, जीन 30,000 है, एक्टिव 2% है. रेटिना का सेल निकाला, जीन 30,000 है लेकिन एक्टिव 2% है. अब यहां का 2% कुछ और है, वहां का 2% कुछ और है. And that is how each and every cell of our body are having different structure and different function. सोचो सबके पास अगर वही रहेगा तो क्या सारे सेल एक जैसे होते. So 30,000 genes are there, but only 2% genes are active. उसको हम कहते हैं जीन स्विच ऑन है, एक्टिव है, और फिर कह देते हैं जीन स्विच ऑफ है, मतलब एक्टिव नहीं है. Let's say I'll give you one example that once you got through the UPSC examination and you are IAS officer, IPS officer. So after 10-15 years of service, yes, 10-15 years of service, you will have some amount of money with you so that you can build a house. है ना? कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, but that is the reality. I know many of my students are now that 12-13 years spent in the service. अब 12-13 साल में अब उनका इन्विटेशन आता है कि सर हमारे घर का वो गृह प्रवेश है, आइएगा.
and they're very happy because they got a house of 80 lakh rupees in Jaipur or Ahmedabad. They're very happy. और उसके बाद परेशान भी है कि सर 40,000 पर मंथ तो चला जा रहा है किसमें, ईएमआई में. आई एम विद ओनली 60,000 रुपीज. मतलब 12 साल की सर्विस के बाद उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है 1,05,000. सो एनी ऑफ यू, इफ यू हैव अ विजन दैट आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अभी भी टाइम है. स्टार्टअप शुरू कर लो, बिजनेस शुरू कर लो. उधर कुछ नहीं है ना, उधर पैसा नहीं है, उधर पावर है, वहां पे पैशन है, एबिलिटी टू चेंज मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइफ इन वन स्ट्रोक ऑफ द पेन, दैट इज देयर. बट मनी इज नॉट देयर. यस, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग. मतलब मैं ऐसे देखता हूं उसको कि मनी भी है, क्योंकि उतनी ही चीजों को जनरेट करने के लिए एक आम इंसान को कम से कम 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे महीने के. एक कुक रखोगे, ड्राइवर रखोगे, 2 बॉडीगार्ड, ये सब करते करते तो 5 लाख रुपीज पर मंथ लगेगा ना. तो आपको 1.25 लाख 10 ईयर्स के बाद मिलता है गवर्नमेंट से कैश के रूप में, और बाकी 3-4 लाख रुपए की आपको फैसिलिटीज मिल जाती है. घर का किराया नहीं देना, खाना कुक बनाएगा, वो भी एक नहीं 2-2 रहेगा, है ना. आईएएस के घर में कभी खाना खाओ ना तो यू विल रियलाइज कि राजा वाजा टाइप मामला है. वो रोटी पता है कैसे लेके आते हैं, एक ऐसे रहेगा उसमें रोटी, एक उसके ऊपर कवर करके लाते हैं उसको, एक टोपी जैसा रहता है, उसे कवर करके एक रोटी लेके आएंगे, दे विल कीप इट, फिर वो वापस चले जाएंगे. समझ रहे हो आप. सो दे वेट फॉर सर और मैडम कि जब वो बैठेंगे तभी रोटी बनाई जाएगी. सो इफ यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ, तो ठीक है, वो तो अनपैरेलल है. सो लेट्स से यू मेड अ हाउस एंड यू आर बिजी मैन और बिजी पर्सन एंड यू डोंट हैव टाइम टू गो देयर कि हम हाउस को देखें. हाउस इज ऑलमोस्ट ओके, कंप्लीट, सब कुछ हो गया. अब इलेक्ट्रिशियन आया. इलेक्ट्रिशियन कॉल्ड यू दैट सर आई एम गोइंग टू पुट सम स्विचेज इन द हाउस, यू टेल मी योर रिक्वायरमेंट. आपने कहा कि ठीक है, आई नीड all possible electronics in my house, so put everything like fridge, television, geyser, microwave oven, right, everything, exhaust fan, AC, सब कुछ चाहिए हमें, तो सारे कुछ लगाओ. उसने कहा कि ठीक है सर 10 चीजें हैं, लगा देता हूं. लगा दिया. Now when you went to your house for the first visit, what you realize कि फ्रिज, oven ये बाथरूम में भी लगा रखा है, उसका स्विच उधर भी लगा हुआ है ना. गीजर बेडरूम में भी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, गीजर नहीं लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है. नाउ दिस 10 स्विचेस एवरीवेयर. तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द रूम यू विल डिसेबल सम स्विच परमानेंटली. कि भाई बेडरूम में गीजर का जरूरत नहीं है, गीजर वाला डिसेबल कर दो, अंदर से एक तार काट दो उसका. बेडरूम में फ्रिज की भी जरूरत नहीं है, बेडरूम में माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है, बेडरूम में क्या रखो तो टेलीविजन एंड देन एसी, फैन एंड लाइट, दिस 4 इज सफिशिएंट. बट इन वॉशरूम यू डोंट नीड टू पुट फ्रिज एंड माइक्रोवेव ओवन. अच्छा लगेगा क्या बताओ, इनकमिंग आउट गोइंग एट सेम प्लेस, राइट. सो रेदर यू हैव बहुत बढ़िया घर बनवाओगे तो हो सकता है एसी वेसी लगवा लो, वो भी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, मत लगवाना, है ना. So fan, light, that would be sufficient. Similar kind of thing is there in our body. Each and every cell has got 30,000 genes, but according to the function of the cell, many of the genes switched off and only 2% remain active. And this 2% is different in all different type of cells. That is why our cells are specialized to perform a particular function. Retina के cells का काम क्या है? Sensing light. So these cells have got different 2% of genes. जबकि मसल के सेल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन. सो दिस हैज गॉट डिफरेंट 2% ऑफ द जीन्स. सो आउट ऑफ 30,000, 2% is distributed all over. So you can write in a specific cell in the body, in a specific cell in the body, only 2% genes are active. Only 2% genes are active and involved in protein synthesis. Right? Clear?
That is why at some time we came across some article कि that's just 2% genes are active, 98% क्या है, inactive है. एक सेल निकाला, कितने जीन एक्टिव है, 2%, right? But there is another thing, because 1000 people's DNA was analyzed. एक का तो लिया नहीं था, कितने का लिया था, 1000. So they made a comparative study also. This 1000 people's DNA was collected from all over world. America made it very sure that they collect the DNA of all ethnic group, all the races. India से भी लेके गए, हर जगह से लेके गए, and 1000 people DNA of different ethnic group was collected, and then this analysis has been done. And still they realize, after comparing two persons' DNA, that we are 99.9% same in our genetics, right? It means that across this globe, anywhere, two human beings, if you compare together, then we are 99.9% same. Just 0.1% is a dissimilarity, and that is why we are different in all the way. Facial से लेकर और body के अंदर के structure और functionality तक. So every single variation is due to 0.1% variability in the gene. Otherwise, 99.9% we are same. So you can write genetic similarity between any two human being is 99.9%. Is 99.9%. Yeah, roots are same, and there is a lot many things which are same. 99.9%. The differences among human beings are due to 0.1% dissimilarities. 0.1% dissimilarities. But let me tell you that the 0.1% dissimilarity could be very big, है ना? याद करो, कल बताया था ना, एक पॉइंट म्यूटेशन बताया था. Ram has red hat, right? Remember? So if I remove H and put C, so is it changing just one word or entire sentence of meaning of the sentence? Entire sentence. So technically there are 12 letters. Out of 12 letters, one has been changed, but this one change has changed the entire sentence. So this 0.1% dissimilarity is not the small one. ये इसी तरीके से एक फंक्शन कर रहा है. एक कोई चेंज, you know, if your hair is straight and somebody's hair is curly, it's a matter of just one nucleotide. एक जगह पे चेंज है, एक एडेनिन थाइमिन का चेंज है, and that is why one is having alpha keratin, another one is having beta keratin. The moment it is beta keratin, then it is curly, it's alpha keratin, it is straight. What is the change? Just one nitrogen base. You get my point? One nitrogen base change can lead to cancer. One nitrogen base can lead to anything. So although 99.9% we are same, that is true in our coding, but this 0.1% changes are spread all across our genes. That is why we are having differences. So we are more similar than different. That is true. We are more similar than different. कैसे? हम सब की जो आर्म्स का स्ट्रक्चर एक ही है ना. The number of muscles I am having, same muscles you are having. The number of bones I am having, same bones you are having. We differentiate human being on a facial feature because we look very closely. अगर आप किसी जंगल में जाओ और जंगल में जाने के बाद एक लेपर्ड आपके सामने से गुजर गया, and you are going for the first time in the jungle, and after 20 minutes, again another leopard came from that side. Are you sure it's the same leopard or different leopard? बता सकते हो आप गारंटी के साथ? नहीं. लेपर्ड को भी नहीं पता चला कि ये जो आया था वो वही था या दूसरा आया है.
बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम लेपर्ड को उतने गहराई से नहीं देखते, और लेपर्ड भी हमें वैसे नहीं देखता, वो भी देखता अच्छा इंसान, अच्छा ये भी इंसान, बात खत्म, बिकॉज बेसिक पैटर्न इज सेम, बट वी लुक एट ईच अदर वेरी minutely. That is why we are able to differentiate, but we are more similar than different, isn't it? है ना? Anyway, yes please. हाँ, ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायजागोटिक ट्विंस, एक होता है मोनोजाइगोटिक. सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 100% सेम होगा, है ना, बट दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस, वो क्लोन है. विल टॉक अबाउट इट. हाँ जी. इट्स अ म्यूटेशन. हाँ, गोल्डन ऑरेंजिश कलर. हाँ, सच एनीथिंग लाइक दैट इज म्यूटेशन. जैसे कि अभी काबिनी में एक पैंथर है जो ब्लैक कलर का है, टोटली ब्लैक, सो दैट्स अ म्यूटेशन, मेलानिस्टिक कहते हैं उसको. एंड देन इन अ सिमलीपाल ओडिशा, वहां पे ब्लैक टाइगर है, मेलानिस्टिक टाइगर. सो दीज आर बेसिकली व्हाट, म्यूटेशन. सो इन सिमलीपाल a tiger got mutated, so melanin production become very high, so that tiger become black, और उसके progeny में भी वो आने लगा. So the entire family of the tiger is now melanistic. उसमें और भी normal भी है, लेकिन melanistic भी है. You got it? So it's a mutation only. It's a mutation. वो mutation है और कुछ नहीं है. But now mutation has established, जैसे कि सिमलीपाल वाले में क्या हुआ, mutation is established. Now it's a gene. It's a again a form of gene. So now this mutation is going to the next generation, so it will be there in the lineage. That is why in a Simlipal they are basically now promoting black tiger safari. अभी लॉन्च हुआ उधर, है ना? तो yes please. So if we did, what is the similarity percentage? Okay, we'll talk about that. अभी next जो हम benefit पढ़ेंगे उसी में आएगा, right? So we are going to talk about benefits of HGP. That what we got out of HGP. आखिर में पढ़ के मिला क्या? When America spent billions of dollars into it and 13 years of hard work, what we got out of it? है ना? So first thing that we got to know about it, that no matter which disease we are suffering, each and every disease has some genetic basis, right? There are two types of disease that basically affect us. So one is genetic disease, for which the gene is coming from parent or forefathers, foremothers, right? And there is another disease that will come from any infection, communicable disease, some deficiency, some impact of the environmental factor. Let's say hemophilia is a genetic disease. We know that if Nana ji is having hemophilia, then daughter will be carrier, and then daughter's sons will have the chances to develop hemophilia. है ना? तो ये प्रोग्रेशन हमें पता है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं. That is called pedigree analysis, and we do it. But nowadays, if you go to any doctor and you are going with a patient and the patient is suffering from heart disease, उनको हार्ट अटैक आया है, तो देखोगे कि डॉक्टर जो है ना वो सारी कहानियां पूछते हैं और फिर साथ में ये भी पूछते हैं कि आप ये बताइए कि फादर साइड और मदर साइड में किनको किनको हार्ट प्रॉब्लम है. दे डू दैट ना, जबकि हमें पता है कि हार्ट डिजीज तो जेनेटिक नहीं है ना, इट्स अ नॉन जेनेटिक डिजीज. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग? और लेट्स से इफ देयर इज अस्थमा इज बेसिकली एलर्जी. Prolonged allergy can lead to asthma. But you might have seen that in a family, if father mother is having asthmatic traits, then वो बच्चों में एक आध में कहीं आ गया, या दादाजी में था तो फिर आ गया. Although there is no clear-cut genetics of it, but we do get this thing. For that matter, obesity, it is not genetic, right? But genetic basis has been established now. ओबेसिटी के दो रीजन, एक तो घर का खाना पीना, हर फैमिली का एक अलग होता है, एंड द सेकंड इज जेनेटिक्स. सो नाउ जेनेटिक्स इज इन सेंटर स्टेज. नाउ एवरीथिंग दैट वी आर लुकिंग इनटू जेनेटिक्स.
है ना. जैसे रिसेंटली देयर वाज मेनी मेडिकल मिथ विच हैज बीन बस्टेड, और उसमें एक बड़ा मेडिकल मिथ ये था कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत सारी बातें थी, एंड देन इट वाज सेड कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल अब ये क्लियर है कि डायटरी कोलेस्ट्रॉल एंड सीरम कोलेस्ट्रॉल नो रिलेशन. इफ यू ईट कोलेस्ट्रॉल it will get digested, and the blood cholesterol has no link with the cholesterol which is there in your plate, right? And by the way, हमारे बहुत सारे खाने में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है. जैसे कि प्लांट्स किंगडम में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं. anything that you eat that is coming from vegetables and plants, it can never have cholesterol. Cholesterol is a chemical that is there in animal kingdom, not in a plant kingdom. So any vegetable oil, any oil that is coming from plant, any plant product, they have zero cholesterol. Got it? But yes, chicken do have cholesterol, mutton have more cholesterol, egg yellow is having cholesterol, right? Any oil which came from the animal fat is having cholesterol. But again, it is said that cholesterol that is coming in diet and cholesterol that is appearing in the serum of the blood has no relationship. Although doctors say that if you are suffering from a heart disease, then stop eating non-veg. कहते थे, अभी भी कहते हैं, क्योंकि सेफ साइड लेके चल रहे हैं. लेकिन इसका मतलब तो ये है ना कि अगर कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी इज लिंक टू द नॉन-वेज ओनली, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही नहीं चाहिए बॉडी में, लेकिन है ना उनको भी कोलेस्ट्रॉल. सो नाउ फ्रॉम वेयर दिस कोलेस्ट्रॉल इज कमिंग? वी आर मेकिंग कोलेस्ट्रॉल, आवर बॉडी मेक कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर बॉडी. नो कोलेस्ट्रॉल नो हेयर. कोलेस्ट्रॉल खत्म तो बाल सारे निकल जाएंगे. कोलेस्ट्रॉल इज अ थिंग विच बेसिकली इंटरेक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, and then vitamin D formation takes place. So there are some amount of cholesterol which are required in the body. If there is no cholesterol or less cholesterol, it will have its own adverse impact. If cholesterol level is gone down drastically, then testosterone hormone will not form. Character of maleness will never get developed. Right? It will create another problem. You get my point? So that is why there is a concept of good cholesterol and bad cholesterol. Good cholesterol are doing all these things which are good for us. स्किन को स्मूथ रखेगा, सपल रखेगा, बाल अच्छे रहेंगे, विटामिन डी बॉडी में बनता रहेगा, सेक्स हार्मोन्स निकलते रहेंगे. गुड कोलेस्ट्रॉल. बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी. It will reduce the volume of the artery. The volume reduced, pressure will increase, and that will lead to what? Hypertension. It will exert over the heart. Heart is a pump. Now heart is pumping blood which is at high pressure, so heart might fail. You get me point? लेकिन ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल आ कहां से रहा है? There are many person who have never eaten a single non-veg in their life. वो नॉनवेज छोड़ो, वीगन है वो आदमी, है ना. वो वेजिटेरियन भी नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल पे, दूध भी नहीं पी रहा, है ना. तब भी कोलेस्ट्रॉल हो गया उसको, हो जाता है. तो कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अस. अब डॉक्टर से पूछा कि इसको क्यों हुआ, तो डॉक्टर ने कहा जेनेटिक्स. द जेनेटिक्स इज देयर. यू गेट माय पॉइंट? आई यूजुअली व्हेनेवर आई गेट टाइम आई हिट द जिम. हमारे कॉलोनी में जिम है तो मैं जिम चला जाता हूं. तो मैंने उस दिन पूछा कि यार सबके बॉडी तो ठीक ठाक बनते हैं, हमारे क्यों नहीं बन रहे? तो बोला कि यू हैव गॉट बैड जेनेटिक्स. एक बार में खारिज कर दिया उसने कि नहीं बनेगा तुम्हारा. बोला कि इट ऑल डिपेंड. आप बोला प्रोटीन खाओ, ये करो, वो करो. मैंने कहा ठीक है, सब तो कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं. बोला जेनेटिक्स का भी तो रोल होता है ना सर. आपका जेनेटिक्स वैसा नहीं है एक्चुअली. वो मतलब मेरे पापा को एक दिन देख लिया टहलते हुए. माय पापा इज आई मीन लिटिल बिट, ही इज कमिंग फ्रॉम खाता पीता फैमिली, राइट. तो ही माइट हैव ब्रांडेड इन दैट वे. Although it not may be very scientific, but nowadays we realize that genetic data can reveal the basis of a disease. I'll give you another example. Let's say in a COVID time, many people got infected by COVID, right? And many people lost their life also. Many people went to the ICU, they came back. So we all had a different impact of COVID on our body. It was not similar. Why? Because our immunity are different,
And what determines immunity in our body? Two things: genetics, that is intrinsic factor, and nutrition, that is external factor. Everything in our body is determined by two things. एक है इंटरनल फैक्टर, जेनेटिक्स है. एक्सटर्नल फैक्टर न्यूट्रिशन है, इन्वायरमेंट है. अब सोचो, आर जेनेटिक्स इज डिटरमाइनिंग आर इम्यूनिटी. And immunity is good, then COVID will come, it will infect us, but it will not kill or make any trouble, and we'll recover. So isn't this genetics playing some role into that COVID also? Play कर रहा है ना? My body is such that my fat metabolism is not so good. So fat metabolism, that means fat is being digested, assimilated, utilized in the body. You know, this fat metabolism is basically biochemical reaction related to fat. Every biochemical reaction is catalyzed by enzyme. You know that? Enzyme is a protein. Protein is coming from RNA, and RNA is coming from DNA. है ना genetic basis? So if I got a DNA which is not producing the enzyme which are optimum or required for proper fat metabolism, then what will happen? My body will deposit fats and cholesterol. And I have to work a little extra for that. So scientists have already proven that whether the disease is genetic or non-genetic, it will have some genetic basis of it, right? So you can write first thing. It revealed genetic basis of many human disease, both genetic and non-genetic in nature. Both genetic and non-genetic in nature. Right. Next you can write analysis of human genome helps in development of predictive and preventive medicine helps in development of predictive and preventive medicine. So once we understand that these are the gray area of our body, of the entire human genomics, then we develop something which are called predictive. कि ये वाला problem हम में आ सकता है, तो let's, as a kind of caution, we should develop this medicine that will be treating this particular disease. We'll come to that. अभी हम आ रहे हैं उस पे. And preventive, कि अगर हो गया तो उसको रोकने का उपाय. There is another area which has came, that is called precision medicine and custom drug. Custom drug is a concept where the drug will be made according to the human genome, right? So human genome will be studied, and according to the human genome, the drug will be made. अभी जो drug हम लोग लेते हैं, medicines लेते हैं, वो कैसा है? Ready-made कपड़े की तरह है. One size fit to all. पैरासिटामोल सब खा रहे हैं, सबको काम कर रहा है, किसी को ज्यादा, किसी को कम. But now we are entering into the era of custom drug, custom medicine, precision medicine. That medicine will be custom made for a particular human being. And especially that will be used in cancer-like disease. Recently you might have come across some medicine that has a very high cost. सुना होगा आपने कि इंडिया में इंपोर्ट हुआ 18 करोड़ का मेडिसिन. नोवार्टिस कंपनी अमेरिका की बनाती है, और उसने बनाया 18 करोड़ का मेडिसिन. सोचो. So what this medicine is? It's a custom drug. This drug will be made for a particular human being by looking into their genetics and conditions. And it's not a medicine, it's an entire procedure and medicine both. There is a disease called SMA, spinal muscular atrophy. And for that, you need to have that medicine. And many people in India who suffered from, kids में होता है वो. And they had to go with that. अब पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, तो क्या किया? सोशल मीडिया से पैसे कलेक्ट हुए, क्राउड फंडिंग से, and they got it. So we have entered into that era. So you can write one more point.
with the help of human genome data, with the help of human genome data, custom drug or designer drug, custom drug or designer drug can be developed which will provide precision treatment without any side effect. Precision treatment without any side effect. Right. So person's genome will be studied and according to that the medicine would be made. So that has created another area that is called personal genomics. क्या कहते हैं उसको? Personal genomics. You can write one more point. Next point you can write. With the help of personal genomics, risk assessment can be done. Risk assessment can be done to find out possibility of a disease in an individual. Possibility of a disease in an individual. So genomics is like you do it in a group, 1,000, 500, 10,000 people का अगर आपने स्टडी किया genomics. If you do it for one person particularly, it is called what? Personal genomics. And what is the role of personal genomics? दो है. So personal genomics can give two things. It can give you two things. You need to understand this. First, it can give custom drug or personalized medicine, and second, it can provide you what? Risk assessment of particular disease. Risk assessment. I'll give you one example. You know the example very well. You might be knowing there is one very famous actress in Hollywood. Her name is Angelina Jolie. जानते हैं? She went through this personal genomics. और एक कंपनी अमेरिका की उसका नाम है Myriad. So Myriad is a company, and this company discovered two genes in human genome. The gene is called BRCA1 and BRCA2. So this Myriad company studied HGP data. HGP data को पढ़ा और HGP data पढ़ने के बाद दो जीन ढूंढ निकाले. These genes are responsible for breast cancer. That is why it is called breast cancer 1, breast cancer 2. So that is for breast cancer. If these genes are present, even one is present, right? If one is present, then it may lead to breast cancer. And two is present, chances would be very high. Angelina Jolie, mother and mother side had a history of breast cancer. Mother was suffering from that. Her aunt died of the breast cancer only. And she is one of the richest actress in the world. So somebody might have suggested, why don't you go for genomics, personal genomics? Nowadays we have technology that your DNA profile can be scanned and we can find out the gene if it is there in you or not. She went for that and she could find both genes there in her genome. ये दोनों जीन उसके पास थे. When she went for this particular test, she was around 40 plus. और ब्रेस्ट कैंसर अगर जीन है ना तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस एज यू ग्रो इन एज इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट इज व्हाई ब्रेस्ट कैंसर हिट एनी फीमेल व्हेन शी इज अराउंड 40 एंड इन द हायर एज ब्रैकेट. Now, having this BRCA1 and 2 gene in the body, it means that chances of breast cancer will be 90% and more. तो 90% तो बहुत होता है ना. अगर कोई बोले कि 50% चांस है कैंसर होने का, तब भी बहुत है. 10% भी बहुत है. यहां तो 90% है. So
It was a risk assessment on her. And to save herself from the breast cancer, she went through double mastectomy, breast removal operation. Right? And I consider she is a very brave lady because इतना पैसा है कि वो चाहती तो ये पूरा मामला secretly रह जाता, पता ही नहीं चलता किसी को. But she chose to come to the public and press. She became vocal about it so that she can spread awareness about breast cancer and its menace. Obviously, सबके पास इतना पैसा नहीं होगा, but at least person and women will be having some kind of awareness that this is also something which can be life-threatening. You get me why? So that is one example of the risk assessment that we are able to do it. So we scan our genetics, we find the genes which are faulty and which can trigger some disease like cancer, and then we can take some action against it. Right? One more point you can write. You can write. The information and data. The information and data of HGP can be helpful, can be useful in gene therapy. What is that? Gene therapy. We are going to have a chapter on that. Gene therapy is a very big issue. Gene therapy is all about that finding a faulty gene and cutting it out of the genome, or finding a faulty gene and replacing it with the healthy gene. So next time it may be possible in future that this BRCA gene can be cut out of the genome and person will be saved. So if you remove any gene which is responsible for any disease in future, then it is called gene therapy. Or you replace any gene which can restore the good health in you, that is also gene therapy. And we are having, in-depth lecture about it. You might have come across one topic, CRISPR-Cas9. कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, वो करंट में खूब चल रहा है अभी. So CRISPR-Cas9 is basically gene therapy का tool है वो. CRISPR-Cas9 से gene therapy इतना बड़ा टॉपिक बना है. Because cutting gene is not an easy task, right? Gene काट रहे हो आप, पेपर नहीं काट रहे. And you need precision technology. CRISPR-Cas9 is most precise way to cut a gene. So we'll talk about it. Anyway, you can write the next point. Now, वो भी एक है gene therapy का एक side effect है कि that can use to genetic engineering can be used to develop bio weapons also, है ना? You can write one more point. HGP data helps in a study of function and a structure of a gene. Function and a structure of a gene. Right? Next you can write. It also helps because Cro-Magnon man, Homo erectus, Homo habilis, ये सारे हमारे ancestors के नाम हैं. And all these things that you study in anthropology and even in history book has been verified according to the genomic data also. ये हमारे बॉडी के अंदर है उनकी भी जीन्स अभी भी. ये जो पढ़ा था ना 75% जो जंक है, that's evolutionary load है. वो evolution के वो पार्ट है जिसका हम यूज अभी नहीं कर रहे हैं. So once you look into your DNA, you get information about your ancestors' DNA. When you compare two races, you can find out the relationship between these two races, how they are linked to each other in past. So many of the anthropology and history things has been re-verified with the help of Human Genome Project, and it is all true. History में भी जो लिखा था वो भी सही है, anthropology में लिखा वो भी सही है, क्योंकि वो भी scientific basis पे ही है ना. But this has given us more direct and credible data, right? So these are all benefits of the HGP. Disease is a primary one. Making drugs and medicine is a secondary, that is linked to disease. Then personal genomics is an emerging area, which is there for risk assessment. Then a structure and function of gene that you can study. And then you can also trace back
our evolution, our migration, our relationship between the different races, right? But this is not all. Whenever there is something, then some issues and concerns would come. हम ऐसे भी तो 4 पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, इश्यूज एंड कंसर्न एंड इंडियाज पोजीशन. सो लेट्स टॉक अबाउट इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ एचजीपी. Issues and concerns of HGP. So all you need to do, right? जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुन के समझ लो. Many things are interlinked, right? Many question that is popping up in your mind right now, उसका आंसर आने वाले लेक्चर्स में मिल जाएंगे, है ना? And still अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. Issues and concern. अच्छा, आपको मुझे पता है कि सबसे अच्छा यही लगा होगा, रिस्क असेसमेंट. ये बढ़िया है. पर्सनल जीनोमिक्स करवाएंगे, पता चल जाएगा कौन बीमारी होना है, पहले ही से उसको बचा के रखेंगे. एंड आई विल टेल यू दैट पर्सनल जीनोमिक्स इज नाउ अफोर्डेबल. अब वो उतना पैसा नहीं लगेगा. अभी इसका इंटरनेशनल मार्केट में $1,000, रुपी नहीं, डॉलर. सो $1,000 में आपका पर्सनल जीनोमिक्स हो सकता है. बट ये है कि वो सिर्फ डेटा देगा. उस डेटा को पढ़ने के लिए फिर अलग से हजारों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट डेटा विल बी एनालाइज्ड विद हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. डॉक्टर्स उसके ऊपर पैसे लेंगे ना, एंड ट्रीटमेंट के लिए फिर और लगेंगे. बट स्टिल $1,000 में अगर डीएनए पढ़ ले रहे हैं तो इट्स अ बिग डील. आई मीन वी हैव कम लॉन्ग वे. जहां पे अमेरिका ने जब इस काम को शुरू किया ना, तो एक बेस को पढ़ने के लिए $3 देता था. कितना डॉलर देता था? $3. और कितने बेस पेयर्स थे? 300 करोड़. तो 900 करोड़ तो एक इंसान पे खर्च किया उसने. आप इमेजिन कर सकते हो. तो अभी तो $1,000 हो गया, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड. 20-22 साल में बहुत कुछ बदल जाता है. एंड व्हेन द टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड, देन रिस्क असेसमेंट इज इजी. बट दिस रिस्क असेसमेंट इज वेरी कंट्रोवर्शियल एट द सेम टाइम. इट इज वेरी यूजफुल, वेरी कंट्रोवर्शियल. व्हाई? इसलिए क्योंकि इसका मिसयूज भी तो हो सकता है. एंजेलिना जोली गॉट टू नो अबाउट द genetic status of her, that she is going to develop breast cancer in a coming time, and she went for double mastectomy. That's fine, perfect. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस देती है, अगर वो जांच पड़ताल करना शुरू कर दे जेनेटिक लेवल पे, तब तो अंजेलिना जोली को कभी इंश्योरेंस नहीं मिलता है ना. अब देखो इंडिया में इंश्योरेंस का रूल क्या है. इंश्योरेंस का रूल है कि इफ यू आर बिलो 35, नो मेडिकल टेस्ट इज रिक्वायर्ड. You just simply go to the insurance company, you submit your birth certificate, you are below 35, without any visible problem that is appearing on your body, you get the insurance without medical testing. और आपको आराम से 1 CR का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस 12-15 हजार पर एनम के प्रीमियम पे मिल जाएगा. You pay 15,000 per annum, and company will give a life cover of 1 crore rupees to your dependent one. That in case the person demise is there, then dependent will get 1 CR. But if your age is above 35, then you have to go with medical test. एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट, ब्लड ले जाएंगे, यूरिन ले जाएंगे, ईसीजी करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब पूछ के डेटाबेस बना के, एंड देन दे विल गिव यू द इंश्योरेंस. Obviously, if report is somewhere not good, which is indicative of any disease, तो फिर 1 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं देगा आपको, या देगा तो कहेगा कि आपका प्रीमियम 15,000 नहीं 50,000 होगा, बिकॉज योर चांसेस ऑफ डाइंग इज मोर. सो दैट विल बी कंपनसेटेड बाय हाई प्रीमियम. यू गेट माय पॉइंट? यहां तक तो ठीक था. इन अमेरिका व्हाट हैपेंड दैट मेनी इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड डूइंग एचजीपी. वो पर्सनल जीनोमिक्स करवा दिया, बिकॉज इन अमेरिका देयर इज रिच पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट अ इंश्योरेंस ऑफ $multi-billion. And they demanded कि ठीक है ब्लड सैंपल चाहिए. ब्लड सैंपल तो ठीक है, you can give it to blood, I mean because medical test is there, but up to medical test only, right? What they did, they basically entered into the genome and they studied the genome also. Once you study the genome, you will find the possible disease that would appear in the future, and on that basis you can deny insurance. तो इंश्योरेंस ले क्यों रहे थे हम? उसी पॉसिबल इवेंट के लिए ना, मिस इवेंट के लिए. नाउ यू आर गेटिंग इनटू जेनेटिक्स, यू आर सेइंग दैट नो, यू हैव गॉट द जीन्स फॉर दिस डिजीज, you might die after 20 years, so I won't be giving you insurance. That means insurance company will be giving insurance to only those people who are going to live for a longer life, ताकि वो प्रीमियम भरता रहे, है कि नहीं?
एक तो वो इशू आ गई, तो अमेरिका में बैन हुआ। अमेरिका में सिविल लिबर्टी यूनियन है, एक सिविल बॉडी है, उसने कहा कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट द एंटायर पर्पस ऑफ द इंश्योरेंस। द कंपनी इज नाउ बिकम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ओनली विदाउट गिविंग एनी सोशल सिक्योरिटी। आपको लाइसेंस इंश्योरेंस बेचने का मिला है तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना। यू आर डिनाइंग दैट। Even more dangerous situation can come in if you go for any job and before that job your genomics study is being done to find the suitability of yours into that particular job. आप बचपन से न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहते थे, you did chemistry honors, PG in chemistry, nuclear chemistry, you did, you cleared PT mains interview, and now you are at the last stage where you are going to become a scientist of BARC, Bioatomic Research Center. लेकिन आपका पर्सनल जीनोमिक्स किया और कहा कि your body is not fit to fight with radiation. So in case of any accident, if radiation is there in the laboratory, then you will die. You will get affected more than anybody else. So now on that basis, job should be denied or not? अब इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी तो है ना। आप कहोगे कि ठीक ही है ना, अगर इफ माई बॉडी इज नॉट एबल टू फाइट विद रेडिएशन, इवन स्लाइटेस्ट ऑफ रेडिएशन विल क्रिएट प्रॉब्लम, तो आई शुड नॉट गो इन दैट जॉब। ठीक है, दैट इज फाइन, बट आफ्टर सो मच ऑफ स्टडीज एट द लास्ट स्टेज, इफ समबडी इज डिनाइड सर्विस, डिनाइड अपॉर्चुनिटी, व्हाट विल हैपन? आप जा रहे हो आर्मी में, तो आर्मी में जाने के लिए ऐसे ही फिजिकल फिटनेस प्रूव करके जाते हैं ना, and then after physical fitness they will look into genetic fitness. क्या आगे चल के मोटा तो नहीं हो जाएगा? आगे चल के हार्ट डिजीज तो नहीं हो जाएगा? इंडोरेंस कितना है? एडवर्स कंडीशन में कितना ये बर्दाश्त कर सकता है? इट मीन्स बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर सुपर ह्यूमंस देन। यू गेट माय पॉइंट? So that will create a different kind of discrimination, right? That is why risk assessment at the one end is good, another end it's wrong. So you can write. These are like? Who writes the code is inherited, like it, no writing, it is coming from the ancestors. No one is writing. The change in code is due to mutation. Mutation, evolution chemistry है वो. Things combined together. It was, life originated due to chemical reaction. Random chemical reaction was taking place. And all of a sudden some nucleotide formed. It's a like of, एक concept है evolution में जिसका नाम है कि अर्थ पे जो ओशन था ना वो बहुत पहले गर्म था, आप जानते ही है, एंड देयर वाज लॉट ऑफ मिनरल प्रेजेंट इनसाइड, एंड दैट वाज अ कांसेप्ट ऑफ हॉट डाइल्यूट सूप. उस कंडीशन में क्या गया था? हॉट डाइल्यूट सूप. हॉट था, डाइल्यूट था, लेकिन सूप था. सूप का मतलब लॉट्स ऑफ केमिकल्स वर देयर, एंड दिस केमिकल रिएक्शन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, एंड दैट इज हाउ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, vitamins, minerals, DNA, RNA, that all formed. It took millions and billions of years to form that. Then first virus came, then first bacteria came, and then that is how it, right? So that is a very complex and process. Still we are figuring out. Yeah, that's a hypothesis only, right? The origin of life. Anyway, so you can write risk assessment is highly controversial. Highly controversial. It may lead to, risk assessment is highly controversial. It may lead to discrimination on genetic basis. On genetic basis in life insurance services, life insurance services, and employment opportunities. Employment opportunities. Right. Now there is another problem which is there with that. Let's say personal genomics, very good, बढ़िया है पर्सनल जीनोमिक्स तो,
But personal genomics can also reveal some data which may be very private in nature, right? Personal genomics, I am giving my DNA to find out the possibility of any disease. That's all fine, fine. But what if my DNA is being misused to get some data out of it, which may breach my privacy as well as dignity? अब कैसे DNA कैसे dignity breach कर देगा या privacy breach कर देगा? Let's say if I am adopted kid in my family और ये मुझे नहीं पता, my father, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हाँ कर रहे हैं, हाँ ठीक है, right, and my father and mother they basically kept it secret. कोई बताएगा थोड़े ना कि हाँ भाई, अब तो बता भी देते हैं, उस जमाने में तो नहीं बताते. These all things was done secretly. And I have given my DNA to some risk assessment. And unnecessary किसी ने कह दिया कि अरे आपका तो मैच ही नहीं कर रहा पापा मम्मी से. You got my point? तो फिर किस तरह का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा? सेकेंड, इफ दिस डेटा इज रिवील्ड इन द पब्लिक, इट्स अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. माई लाइफ वॉज गोइंग स्मूथली, मैं तो मान के चल रहा था कि ठीक है सब कुछ, बट ऑल ऑफ सडन देयर इज अ साइकोलॉजिकल चेंज, देयर इज चेंज इन पीपल्स परसेप्शन. ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, डिग्निटी भी हो सकता है. लेट्स कंसीडर दैट, I mean, you know that there are in this earth only, there are many kids who are there in a mainstream जिसके फादर का पता नहीं है ना. एक केस है एनडी तिवारी, रोहित शेखर का, पता है ना आपको? एनडी तिवारी का एक बच्चा था रोहित शेखर, और ही वॉज आउट ऑफ द वेडलॉक, है ना. तो एक अफेयर से वो बच्चा था, बाद में शादी किया उन्होंने. तो आई एम टेलिंग यू दैट ओके, रोहित शेखर fought a case till Supreme Court to prove that he is father, right? ये इसी इंडिया की बात है, and we are talking about रोहित शेखर and एनडी तिवारी because that is high profile case. तो आपको क्या लगता है इस पूरे हिंदुस्तान में रोहित शेखर एक ही था? हजारों लोग होंगे, और हजारों लोगों में से हजारों लोगों को पता भी नहीं होगा, और पता होना भी नहीं चाहिए भाई देवे, right? But what if the data is revealed? Isn't it breach of dignity then? है कि नहीं? या फिर चलो एक और देखते हैं. In history we talk about, when we talk about medieval India and the other part, then we talk about कि चलो उधर सेंट्रल अफ्रीका से हमारे देश पे बहुत सारे इन्वेजन हुए. अभी इन्वेजन करने जो आते थे वो तो चल के आते थे ना, मतलब they were, they are traveling for years and they come for plunder and they stay in India for years. पहले यहां लूटपाट मचाया, 2-3 महीने वहां रहे, फिर वहां, ऐसे इंडिया में वो कई साल रहे, फिर वो लूट वूट के लेके गए. दे मेड मैरिजेज ऑल्सो इन इंडिया फोर्सिबली और बाई एनी मीन. उन्होंने यहां शादियां की यहां के फीमेल से, उनके बच्चे भी हुए. मेनी ऑफ द फीमेल एंड किड्स दे टुक इट अवे विद देम, मेनी ऑफ देम दे लेफ्ट ओवर हियर ओनली. इन हिस्ट्री बुक वी स्टडी कि इस दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया आर हैविंग progeny and offspring of that particular invader. वहां से उनका कुछ एक अपना लीनिएज, उनका एक अपना खानदान निकला हुआ है, ठीक है. बट आपको आज तो कोई मिला आपको जो बोले कि चंगेज खान का मेरा एंसेस्ट्री है? नहीं मिला ना. बिकॉज इन इंडिया एवरीबॉडी हम सब, वी ऑलवेज रिलेट आवर एंसेस्ट्री ईदर विद एनी गॉड और विद अ वेरी गुड सैंटली पर्सन, मतलब कोई ऋषि मुनि के साथ. बढ़िया, अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है. दैट्स हाउ द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिएटेड. अगर आप इसके फिलॉसफी पे जाओगे कि व्हाई डू वी रिलेट विद सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और कश्यप ऋषि और भारद्वाज ऋषि, इनसे हम रिलेट क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट अ आइडल सो दैट वी कैन लुक अप टू देम, कि भाई ये तो इतने अच्छे थे, तो उन्हीं के हम वंशज हैं, तो हम बुरे कैसे हो सकते हैं? दैट इज हाउ आवर सोशल फैब्रिक हैज बीन मेंटेन्ड. बट रियलिटी तो ये हो सकता है नो. आई एम नॉट सेइंग कि रियलिटी ऐसा नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड भी होता है. लेकिन हो सकता है रियलिटी ये नहीं हो ना. हो सकता है कि अ लीनिएज, अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर फैमिली
who is saying that I belong to that particular lineage of God, in actual, he is basically lineage of an invader. लेकिन ये रहने दो अंदर ही. It should be below the carpet. It should not come out. Otherwise, it will create a lot of problem in society. अभी कम है क्या? We are basically separating the entire society on the basis of caste, creed and religion. उसके बाद ancestry पे भी आ जाओगे आप. You get my point? So that is the problem. That is why I'll tell you one thing. That is why there was a bill in Parliament that was DNA Technology Regulation Bill, and that bill was removed from parliamentary procedure because of the privacy issue with that. यही तो था कि आप कास्ट भी डाल रहे हो, उसमें रिलीजन भी डाल रहे हो और डीएनए पढ़ रहे हो. That means someday somebody can segregate the DNA database according to caste and religion. और वो भी किसका? क्रिमिनल्स का. क्रिमिनल्स डीएनए विल बी कलेक्टेड, इट विल बी प्रोफाइल्ड एंड उसपे कास्ट और रिलीजन लिखेंगे. तो आप कह लोगे बार चार्ट बना दोगे कि मर्डर इज डन बाय दिस पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन मोर देन दिस रिलीजन. यू गेट माय पॉइंट? Which kind of society will make then? How kind of branding we are going to do with the caste and religion then? You get my point? अभी कम है क्या? अभी भी तो चल ही रहा है ना इस तरह का, लेकिन वो तो साइंटिफिक डेटा होगा. दैट हैज बीन डिस्टॉर्टेड. मर्डरर्स आर मर्डरर्स. वो मर्डरर्स है, उसका कोई मोटिव था, उसका रिलीजन से कोई लेने देना नहीं था. बट कोई एक रिलीजन तो होगा ना जिसमें सब मर्डरर्स होंगे. यू गेट माय पॉइंट? लकली कोइंसिडेंसली ऐसा ही तो होगा ना. डेटाबेस तो बना देंगे वो. एंड यू नो दैट स्टैटिस्टिक्स एंड डेटाज आर लाइज एंड लाइज एंड लाइज ओनली. वो सही पिक्चर तो दिखाता नहीं. सो दैट इज द अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग थ्रू, दैट दिस शुड नॉट बी डन इन दैट वे दैट इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब आवर सोशल फैब्रिक. सो यू कैन राइट वन मोर पॉइंट. एचजीपी डेटा और पर्सनल जीनोमिक्स. एचजीपी डेटा और पर्सनल जीनोमिक्स can reveal genetic information about our ancestors and lineage. Which may shatter our belief system, and social fabric. It's the same like this. हम जिस चीज को बिलीफ मान के जी रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया है. डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू. कई बार होता है ना कि पीपल, आई मीन दैट इज व्हाट द विजडम इज ना. साइंस का जुडिशियस यूज होना चाहिए. साइंस इज ऑलवेज डबल एज स्वॉर्ड. I mean, you are able to read the DNA doesn't mean that you will read the DNA to reveal the very private and very sensitive information out of it. Because the society is in this structure because of some motive behind it. कि हमने कहीं से लिंक किया God से, राम से, कृष्ण से. Why? Because we wanted to create a kind of setup where we can say like you are coming from the Ram lineage. So anything you are doing wrong, it is against our tradition. तो वो एक तरीका था ह्यूमन को डिसिप्लिन करने का. तो रियलिटी चाहे जो भी हो, तरीका तो यही था. एंड देन यू विल शैटर इट, देन व्हाट विल हैपन? अब तो हमारे अंदर इनग्रेन है वो. अब जैसे ही कोई कहेगा कि नहीं, यू आर नॉट फ्रॉम दैट, यू आर फ्रॉम दैट लीनिएज, वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दैट. राइट? यस प्लीज. उसका पर्पस तो दूसरा कि आई मीन ये जो रिलीजियस सिस्टम है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी फॉलो करती हैं, लाइक स्पेन एंड ऑल, कि क्रिमिनल्स है अगर कोई तो उसके अगर डीएनए प्रोफाइलिंग है तो केसेस इजीली सॉल्व हो सकते हैं. अगर आगे हम मान लेते हैं कि एक टेंडेंसी है, तो जस्ट ऑन द बेसिस कि उसका मिसयूज हो सकता है, तो हम उसके यूज को तो इग्नोर कर रहे हैं. बिल्कुल. लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना, विद दैट बिल देयर वाज अ प्रॉब्लम कि दैट देयर वाज अ कॉलम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन अटैच्ड टू दैट. स्पेन इज नॉट मेंशनिंग कास्ट एंड रिलीजन. हम रिलीजन कास्ट मेंटेन कर रहे थे. तो अब हमने कहा कि इसको हटाओ.
Let it be like a secular kind of thing where caste, religions are not mentioned. So that is why this bill got passed in Lok Sabha. वो तो राज्यसभा वालों ने रोका, बोला हम अपर हाउस है, हमारा कॉन्सेंस ज्यादा बड़ा है, हम नहीं पास होने देंगे, क्योंकि हाँ विजडम है. तभी तो हम बोलते हैं ना कि राज्यसभा इज बेसिकली मोर विजडम इज देयर. वहां पे तो लोकसभा में कौन रोक सकता है आज के डेट में बिल को? द मोमेंट यू ब्रिंग इट, वो पास हो जाएगा 1 सेकंड में. तो हाँ, तो वो है, देयर इज एन एलिमेंट इन दैट ऑन दैट बेसिस इट वाज डिनाइड, राइट. एंड मोर ओवर हमारा तो कंट्री है डाइवर्सिटी का, सो डाइवर्सिटी शुड बी मेंटेन इन दैट वे ना. यू कैन नॉट ब्रांड डाइवर्सिटी विद एनी क्रिमिनल एक्टिविटी और डीएनए और समथिंग लाइक दैट. तो आएगा वो बिल को रिवैम्प करके लेके आएंगे. दैट इज हाउ द गवर्नमेंट हैज टेकन बैक, है ना. एनीवे, so next one, so that is the human genome project that we have done. Now we are going to talk about what is after this human genome project. So after this human genome project, there is another one that is called HGP Right. That is very interesting. HGP Right. So now we have started something called HGP Right. HGP Right is already going on. The timeline is 2016 to 2026. So this is going on. It is multinational or international effort. Many countries are associated with it. और इसमें क्या कर रहे हैं देखो, बहुत सिंपल सी बात है. इन HGP द ओरिजिनल वन, तो ओरिजिनल वन को भी हमने थोड़ा नाम चेंज कर दिया. अब जो पुराना वाला था ना, उसको हम कहते हैं HGP दैट वाज देयर इन 90 to 2003. अभी पढ़ा ना हमने. नाउ समटाइम द पीपल आर सेइंग दैट इट इज HGP रीड. Why this read word has been added? Because now we call it right, so we started calling it read. What was there in read? Read में क्या किया था? First HGP was, original HGP was what? We took the DNA out, we read all the information and we transfer it to computer. यही तो किया. हम उल्टा कर रहे हैं. In HGP right, we are just doing reverse. We are going to create a database on computer, a database of adenine, guanine, cytosine, thymine, according to our own formula. We are going to create it, and then once we create, then we are going to put it onto the DNA. We are going to create a DNA in the laboratory where all the data according to our wish will be there. That is why it is called HGP right. पहले में DNA पर जो डेटा था उसको पढ़ा था, अभी क्या कर रहे हैं? DNA पे डेटा लिख रहे हैं. The data that we want to write it. Now the question is, can we create DNA? Yes, we can create. In lab, we can create DNA. We can create entire genome. We have created entire genome. 2010, entire genome has been created of bacteria. So it's not a big deal that we can create DNA or not. We can create DNA, we can create RNA, we can create protein. हम सब synthetically बना सकते हैं. So what we are doing in Human Genome Project, right? We are going to create an entire human genome according to our own formula, so that we can study in a better way. जो छूट गया हम उसको भी पढ़ेंगे. So you can write. And you can write. This project is initiated by multinational organization. Center of Excellence of Engineering Biology. Center of Excellence of Engineering Biology. Center of Excellence of Engineering Biology. Full stop. Under this project, a genomic data will be created on a genomic data will be created on a computer. This data will be transferred to DNA. In other words,
base pair sequence will be written on DNA at laboratory that will lead to development of artificial human genome. That will lead to development of artificial human genome. Right? Simple. पहले पढ़ा, अब लिख रहे हैं. We are going to create a human genome in a lab so that we can study about human genetics better. We can study disease better. So you can write next paragraph. This artificial human genome will help in better understanding of human genetics, human disease, and its treatment. Right? So this is about HGP right, next installment of it. But now when we have developed so far in genomics, then we realized why only human beings? सिर्फ human being का genome क्यों पढ़ना है? I mean, human being is not alone. We are not living alone. Moreover, human being is most intelligent animal present on this earth. And we learned how to use the resources around us. हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सब रिसोर्स ही तो हैं. We use them for our betterment. We get medicine out of it. We get food out of it. We get commercial product out of it. So why can't we study them too, so that we can make better use of them? And for that we started something called Earth Biogenome Project. That is called Earth Biogenome Project. We started in 2018. It's still going on. It will go up till 2028. Again, it's a global initiative. मतलब नेचुरल तो हाँ वही है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन ही है, और क्या है? बस ये है कि हम अपने हिसाब से लगाएंगे. मान लो कि बीआरसीए जीन मिला ही नहीं हमें, तो हम बीआरसीए जीन लगाएंगे उसमें. हम वो डिजीज के जीन स्पेशली डालेंगे कि इफ दिस जीन इज देयर देन हाउ इट इज गोइंग टू फंक्शन. यू गेट मी पॉइंट? So once you study whatever you get, now we have advanced so much that we want to get a specific genome which has got all the interesting area into it. तो हम एक जीन्स का कलेक्शन अपने खुद के लिए बना रहे हैं so that we can study better. हाँ, कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे, सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे. So Earth Biogenome Project is a very massive project which is going on right now. India is also participating into it. और इसका सिंपल एक एम है that let's do genome sequencing of every single organism which is present around us. ग्रास से लेके बैम्बू तक और एक इंसेक्ट से लेकर और एलिफेंट तक सबको कर देना है so that we can use them better. You get my point? Better का मतलब कैसे कि अगर हम let's say if we want to make a commercial use of any silkworm, if we study the silkworm genetics, then in future we can make some improvement so that silkworm will produce more silk. You get my point? Or let's say if we look at something, let's say हम लोग फिशरी करते हैं, हम एनिमल रेयर करते हैं, कैटल्स ग्रो करते हैं, हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. If we study the genetics of these cattles, then it may lead to improvement in milk productivity, meat productivity. If we study the crops around us, it will lead to development of GM crops, better productivity.
So the whole idea is to create a massive database of all the organism which is present around us. और उसमें हम लोग फर्स्ट फेज के अंदर we are going to do 15 lakh यूकैरियोटिक स्पीसीज we are going to study. 15 lakh. अभी और भी होंगे लेकिन 15 लाख तो अभी करेंगे. So you can write. In this global effort, 15 lakh eukaryotic species, plant, animal and protozoa. You know that eukaryotic word? A cell which has got different nucleus is called eukaryote. यूकैरियोट में 3 लोग नहीं आते. बैक्टीरिया नहीं आता, ब्लू ग्रीन अलगी नहीं आता और माइकोप्लाज्मा नहीं आता. माइकोप्लाज्मा शायद ना सुना हो आपने, लेकिन 2 तो पक्का ही सुना होगा. बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी. So blue green algae bacteria, they are called prokaryote. Except from them, all the life forms existing on the earth are known as eukaryote. Like we are eukaryotic because we have got definite nucleus. So plants, animals and protozoa. Protozoa is amoeba, plasmodium, malaria wala, है ना? So 15 lakh eukaryotic organism will be mapped and sequenced. At genomic level. Next point. Under this project, almost every species living around us, will be mapped or sequenced. Sequencing, that means reading. Next point you can write. Objective of this project is to create a new foundation of biology, comma, better understanding of biodiversity, better understanding of disease, new drug discovery, and development of GM crops. Right? So let's say if we sequence all the eukaryotic organism that is present around us, क्या क्या कर सकते हैं हम? पूरी biology rewrite करेंगे, because the kind of insight it is going to give you at genomic level. जैसे कि मैंने कहा ना कि biology तो था ही, but once we have done human genome project, we got to know about lot many things for the human being. Similarly, we are going to know lot many things about plasmodium, amoeba, elephant, ant, bamboo, banyan tree, mango tree. And who knows, this database can serve a lot of useful purpose. Conservation of biodiversity can be done in a better way. From the nature only we can get the new drugs, new molecules. We can develop new GM crops. GM crop में क्या करते हैं आप? आपने क्या किया कि राइस में आपने विटामिन ए का जीन डाल दिया, तो राइस का जीनोम पहले पढ़ा होगा ना, और फिर डैफोडिल का जीनोम पढ़ा, एंड डैफोडिल से विटामिन ए का जीन राइस में डाला, तो पढ़ा तो दोनों ना पहले. तो दिस स्टडी वी हैव डन ऑन अ टारगेट बेसिस कि इसको पढ़ना है, दोनों को मिलाना है. व्हाट विल हैपन इफ वी हैव स्टडीड ऑल? हम सब पढ़ चुके होंगे तो क्या होगा? तब तो सिर्फ मिलाना ही रहेगा ना. एंड वी हैव मोर ऑप्शंस टू डेवलप.
We don't need to look for the daffodil or need to search something. We will have a database कि कौन से काम mix and match कर सकते हैं. And that is a reality. I mean, that is what we need to do. I mean, green revolution एक हो चुका, लेकिन वो sufficient नहीं हो रहा अब हमारे लिए. We need to go for the next one. And we are at the threshold of green revolution part 2. Green revolution in India was basically catalyzed by modern agriculture system, hybrid seed and agrochemicals. MS Swaminathan, अभी कुछ दिन पहले demise हुआ उनका. But now we are basically at the verge of getting into green revolution part 2, and that will be catalyzed by GM crops. इसीलिए देखो अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है DMH 11 पे, आप पढ़ रहे होंगे, हर महीने 2-3 उस पे आर्टिकल आ रहे हैं आज के डेट पे. GM मस्टर्ड पे सुप्रीम कोर्ट में PIL है, प्रशांत भूषण का नाम सुना है, वो केस लड़ रहे हैं, और वो जो केस लड़ते हैं उसका फिर हिसाब किताब बराबर कर देते हैं. And Prashant Bhushan is saying that it should not be applied, it should not be accepted in agriculture system. और गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है आज से 10 दिन पहले कि इफ यू डिनाई, इफ सुप्रीम कोर्ट पुट अ बैन एंड डिनाई दिस GM mustard, it won't be good for the country because country need GM crop. मैंने आपको यूपीएससी एस्पिरेंट है आप, अगर आपसे इंटरव्यू में कभी सवाल पूछते कि डू वी नीड GM crop और नॉट, तो योर आंसर शुड बी सिंपल वन थिंग, यस वी नीड इट. यस, उसके लिए हम लॉजिक्स डेवलप करेंगे, काउंटर लॉजिक डेवलप करेंगे, लेकिन पहले तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए ना कि हमें किधर बैठना है, दिस साइड और दैट साइड. तो दैट वन साइड यू हैव टू टेक. और अभी का जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, वेयर यू हैव टू राइट अ मेंस आंसर इन 200 वर्ड्स, तो उसका सिंपल एक थंब रूल होता है. जीएस के पार्ट्स में तो कम से कम गवर्नमेंट के साथ चलना है. डोंट नीड टू गो अगेंस्ट गवर्नमेंट. देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू गिव एग्जामिनेशन, वहां पे पूरे जीएस के एक पेपर में 5 ही क्वेश्चन लिखने होते थे. एक पेपर जीएस, 3 घंटा टाइम, 5 क्वेश्चन लिखने, हर क्वेश्चन इससे 3 घंटे में 5 क्वेश्चन, समझ रहे हो, सब पे ऐसे ही लिखना था. तो उसमें वी कैन अफोर्ड टू गो अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि देखो आप गवर्नमेंट के प्लान्स पॉलिसी के साथ जाओगे ना, जल्दी प्रूव हो जाएगा. कम में लिख दोगे, अगेंस्ट जाओगे तो फिर निबंध लिखना पड़ेगा, और उतना टाइम भी नहीं है, उतना स्पेस भी नहीं है, वर्ड लिमिट भी नहीं है. दैट इज वाई स्लोली इट बिकम अ थंब रूल, गो विद द गवर्नमेंट. और लॉजिकली भी देखो तो GM क्रॉप तो चाहिए ही ना, एंड दैट विल हेल्प इन दैट. विल टॉक अबाउट GM क्रॉप मोर एंड इन डिटेल व्हेन वी स्टार्ट द टॉपिक. नेक्स्ट यू कैन राइट जीनोमिक्स इन इंडिया. ये तो हो गया इंटरनेशनल एफर्ट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीनोमिक्स in India. Nothing will complete when we talk about India, unless we talk about India. Or genomics in India में 2 parts. There are 2 points that we can discuss. One is health, another is agriculture. So one is agri, another one is health. That is the 2 area that we are discussing in genomics. Right. So be very clear that when they ask what is the status of genomics in India, then we have to divide it into 2 parts. है ना? Yes, please. Ability to produce DNA, genes, RNA. We had produced test tube babies and everything. So can we say that in future we will able to create human beings? Not producing तो हमारी हमेशा से अच्छी थी, but we will able to create even human beings. मेरे क्लोनिंग अलाउड नहीं है कि वी कैन क्रिएट इट. टेक्नोलॉजी इज देयर, SCNT हम लोग पढ़ेंगे भी, बट इट्स नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द सोशियो एथिकल एस्पेक्ट, है ना. क्योंकि क्यों प्रोड्यूस करना चाहते हो ह्यूमन बीइंग? नहीं, वो नहीं, क्वेश्चन नहीं है वो. तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, आप ऑफस्प्रिंग हो. यू हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय फैमिली सेटअप, right? We all have been produced by family setup. So we have a family right. We have a kind of love and attachment, and that is reciprocal with the family. We also have towards family. Family is also having towards me. What if I can generate one human being? तो मैं तो क्लियर हूं बिल्कुल कि if human being can be generated,
by technology, not out of family setup. तो I'll create it so that one day if I need heart implant, उससे ले लूं मैं. So basically you are creating human being to harvest the organ. यही करोगे ना. माता पिता तो कभी नहीं बोलेंगे ना कि अपना ऑर्गन दे दो. They will die but they will never ask you. You get my point? They will choose to die कि चलो ठीक है तुम किडनी मत दो, I will manage it, whatever life I have. But if we are able to produce human being mechanically in a lab, what kind of attachment we are going to have? And think of the situation that human being will have human being, the conscious will be of human being. वो तो इंसान है, हम उसको मानेंगे? हम नहीं मानेंगे ना. हम कहेंगे माई प्रॉपर्टी है ना, मेरे जैसा बनाओ, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होना चाहिए और खिला पिला के ठीक रखो, जब भी जरूरत होगी ब्लड निकालेंगे इससे, है ना. ऑर्गन हार्वेस्ट करेंगे, किडनी ले लेंगे, हार्ट ले लेंगे, यही करेंगे और क्या, मिसयूज हो. दैट इज वाई क्लोनिंग इज बैंड, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है ना. क्या करोगे आप, ऐसे ही इतने सारे पड़े हुए हैं, ऊपर से क्लोन भी होगा. तो विल टॉक अबाउट इट एनीवे. हाँ जी. In Earth Biogenome Project, India is there, and for that India is also having its own Earth Biogenome Project. उसमें 1000 वाला काम इंडिया कर रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं उसको. So genomics in India. Let's talk about agriculture. कल हम लोग हेल्थ की बात कर लेंगे. You can write. You can write in agriculture. In agriculture. So basically इंडिया में genomics की शुरुआत एग्रीकल्चर से हुई थी. 2002 was the first time when India entered into genomic study, because in 2002 India, Philippines, China, Japan, they all decided that they will go for rice genome project. Rice का genome पढ़ेंगे वो. 2002 it was quite advanced. 1990 में शुरू हुआ. 2002 तक आते आते Japan and China was helping America in their genome project. They have access to the technology. India was not having any access to technology. Philippines was not having any access to technology. But Japan, China, India and Philippines, these four countries and these country, we are eating rice as a staple diet. राइस में हमारा इंटरेस्ट है. यूरोपियन कंट्री का इंटरेस्ट राइस में नहीं है, वो उगा ही नहीं पाते तो इंटरेस्ट क्या होगा. अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, वो वीट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, हम राइस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. So we decided that we'll go for the rice genome project so that we can understand the rice better at genetic level. Japan helped India to understand the genomic science. In Delhi only there is a one institute at Mall Road, Delhi University के पास है, Indira Gandhi Institute of Genomics, and there the things started, and we submitted the report within few years only, and that is how India got to know about the science behind genomics, the technology behind genomics. तो हमें सिखाया किसने? जापान ने. लेकिन हम सीखते बहुत बढ़िया है. हमने जब एक बार सीख लिया तो by 2013 we have sequenced around 20 different varieties of rice. हमने खुद से करना शुरू कर दिया. And then after that we sequenced this chana यानी gram, many lentils, tulsi, haldi, wheat. We have sequenced a lot of them. So you can write. In India, genomic studies started in India, genomic studies started in 2002. 2002, when India became part of International Rice Genome Project. International Rice Genome Project. After that, next point, after that, India sequenced genome of many crop plants. Wheat, like wheat, pulses, sugarcane, mustard, turmeric and tulsi.
Next you can write. In 2017, Karnataka Agriculture University sequenced genome of ragi. You know, ragi is very popular nowadays. Superfood type उसको हम treat कर रहे हैं. And ragi is really very good. We have forgot, I mean, India forgot ragi. I mean, northern part में तो ragi अब खाना शुरू किया. Southern part में तो पहले से खाते हैं लोग. And ragi is a grain. It's a grain. It's like rice. It's a good source of starch. But it's better than rice in all the way. Because ragi has not only having a starch, but also having some micronutrients. Vitamins, minerals भी है उसमें. जबकि राइस में तो कुछ भी नहीं है. राइस इज प्योर स्टार्च. राइस इज नॉट बैड एट ऑल. आपको मैं बताऊं, राइस की ब्रांडिंग हमने बैड कर दी है अंडर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, बिकॉज वेस्टर्न कंट्री वांटेड टू पुश देयर wheat. That is why rice has been degraded in the branding. जबकि wheat ज्यादा problematic है. ग्लूटेन का सारा मामला wheat से ही तो है, राइस से कहां होता है. So I mean, obviously, now we understand. Now we are on the verge of becoming developed country. Now we have, access to the science and technology. Now we are doing our own research. नहीं तो पहले हम क्या करते थे? Research that happened in America, we'll read that. According to that, we'll made up our mind. So rice is not bad, it's good, right? But ragi is even better. Ragi is better in nutritional aspect and ragi is better in agricultural aspect, because ragi doesn't require the kind of irrigation that you need in rice. Rice में तो पूरा पानी पानी चाहिए. And Karnataka Agriculture University, they sequenced the ragi and they recognized a set of gene which make ragi suitable for semi-arid cultivation. जहां पे बहुत पानी नहीं है वहां भी हो जाएगा. And now what they are trying to transfer this gene from ragi to rice. सोचो, रागी से अगर राइस में हमने जीन ट्रांसफर कर दिया सक्सेसफुली, so we can develop a rice variety where it will not require the kind of irrigation that we had to give to the rice. That is why in India rice growing states वो हैं जहां पे खूब बारिश होती है, जो यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार एंड देन द अदर एरिया, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि वाटर लॉग्ड कंडीशन चाहिए उसकी. आई मीन हरियाणा एंड पंजाब कैन नेवर ग्रो राइस बिकॉज ऑब्वियसली उतना पानी नहीं मिलेगा. सो दे आर बेसिकली फोकस ऑन व्हाट? व्हीट. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. सो यू कैन राइट sequenced genome of ragi and discovered a set of genes which make ragi suitable in semi-arid land, suitable in semi-arid cropland. In future, these genes can be used to develop. In future, these genes can be used to develop drought-resistant crop varieties. Drought-resistant crop varieties. So that is what we are doing in agriculture. Crop improvement में हम लेके आ रहे हैं, एक दूसरा काम भी कर रहे हैं. You know, rhizobium is a bacteria that is there for nitrogen fixation. But do you know nitrogen fixation rhizobium does only in legumes, only in pulses? So rhizobium make a symbiotic relationship with pulses. Rhizobium live in the root node of the pulses and there it fixes nitrogen in the pulse. तो हम देखते हैं कि जहां पे हम पल्सेस उगा रहे हैं ना, वहां पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की बहुत जरूरत नहीं है. Rhizobium will take care of that. But whenever we are growing wheat and rice, then we have to put urea. अगर हम राइजोबियम के अंदर कुछ चेंज कर दे कि ये थोड़ा हेल्प राइस को भी कर दे तो ठीक रहेगा. यू गेट माय पॉइंट? द प्रॉब्लम विद राइजोबियम इज राइजोबियम को हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है.
बट राइजोबियम कहता है कि ओके, I'll enter into symbiotic relationship, then only I'll help. And rhizobium says that I need a place to live. And the place that I need to live, that should be oxygen free. Rhizobium जहां हम ऑक्सीजन नहीं हो. आपको पता होगा कि the roots of legumes, they have nodes, right? And these nodes are pink in color. किस कलर का होता है? पिंक कलर का. इसमें एक पिगमेंट है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन. दैट इज लेग हीमोग्लोबिन. अब आप सोचो, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन तो हमारे कहां होता है? ब्लड में होता है. यहां पे कैसे है? सो दिस इज लेग हीमोग्लोबिन. लेग hemoglobin, because leg hemoglobin create oxygen free environment. For what? For whom? Rhizobium. So leg hemoglobin is legume hemoglobin that is there only in leguminous plant. And when this leg hemoglobin is present in root, then in that part of the root rhizobium can stay, because leg hemoglobin will keep द सराउंडिंग ऑक्सीजन फ्री. अगर ऑक्सीजन आ गया, हीमोग्लोबिन रिएक्ट कर जाएगा, उससे पकड़ लेगा उसको. सो देयर इज नो फ्री ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन कलर इज रेड, लेकिन यहां पे हीमोग्लोबिन थोड़ा सा है तो इसका कलर कैसा होगा? पिंक. यू गेट माय पॉइंट? दैट इज बेसिक बायोलॉजी. दैट राइजोबियम मेक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ओनली विद लेग्यूम्स. व्हाई? बिकॉज लेग्यूम कैन प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट टू द राइजोबियम. What is a suitable environment for rhizobium? Oxygen free environment that can be provided by legume, because legume has a special pigment in the root that is called leg hemoglobin. तो दो तरीके हैं, या तो leg hemoglobin लेके आओ राइस में, या फिर rhizobium में चेंज करो. Make some change in rhizobium so that rhizobium can work even if there is oxygen present, right? And that is what we have done it. Indian scientists have done it. They have changed rhizobium in such a way that now it can be used with rice and wheat also. And it is a potential biofertilizer. अभी बायोफर्टिलाइजर हो गया, क्योंकि राइजोबियम अब व्हीट के साथ, राइस के साथ, सबके साथ चलेगा. तो on experimental basis we have done it. And how we have done it? Because we studied the genome of the rhizobium first and then the change was made. So you can write, Indian scientists have studied rhizobium genome. Rhizobium genome to make some changes in rhizobium to convert it into biofertilizers for other crops, right? So this is about agriculture, that what we have done so far in agriculture. Obviously agriculture biotechnology तो हमने शुरू भी नहीं किया अभी. GM crops and all, will talk more about it, so that will have more insight. Yes, please. Legume is pulse. There is another name. Synonym of pulses are lenticels, pulses and legumes. These all are synonyms, right? So I'll see you tomorrow. इसको फिनिश करेंगे और कल हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट? सो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो.